Okay, so the dataset is downloaded, and now let us start with the project. Okay, so as it is, we know that we are going to deal with sentiment analysis, right? So let us name the file as sentiment analysis. Okay, and towards the end, once we are done with the project, we will also revise stemming, lemmatization, all those things quickly. We will revise also today so that everything is, very crystal clear in your brain again. Fine. So this is sentiment analysis, movies review dataset. Okay. Now, first thing first, if you can recall, while discussing about Python, specifically pandas, वहाँ पर I told you कि whenever you are talking about pandas, you can load the data, you can read the data, and you can do certain manipulations with respect to the data. Okay. So what is the first thing? We will be importing necessary packages. So importing packages, and what is supposed to be imported? I will import pandas as PD, and I will also import matplotlib dot pyplot as plt, because I have to do certain visualizations also. Pandas will help me in loading the data, in reading the data, and matplotlib will help me in visualizing the data. है ना? Data visualization में वो help करेगा. Fine. So this is what I am doing. Now I will load the data on my platform, on my Collab platform. So for that, on the left hand side corner, ये bar that you see, click on this option, this files option, then click on this particular option, and then go to wherever your data is stored. So it is a TSV file, so I'll say .tsv. Okay. Where is the data? So this is the data. The name is train.tsv. The same data that I showed you yesterday on the platform. So इसको load होने दो. Let us wait for some time. It is loading here on Collab, and then we will proceed ahead from here. So first of all, you will have to load the data on your Collab platform. Then from there on, you can read the data, you can manipulate the data, you can get certain information from the data by the help of pandas library. Okay. So let us wait till it's done. थोड़ा बड़ा data set है, इसलिए थोड़ा time लेगा. And as it is a text file. Okay, you see the extension is .tsv. TSV मतलब text separated values. मतलब these are text values that are there. मतलब text as words, you can say different words are there, and that is why ये थोड़ा सा size में bulky होता है. Okay, generally when we talk about machine learning, we deal with .csv file, which is comma separated values. Over there, the values that we have, they are all numerical in nature. Number होता है. Okay, तो number को load करना ज़्यादा time taking नहीं होता है. But when we talk about text, in that case, it becomes a bit more time consuming क्योंकि उसका size बड़ा हो जाता है. So it's almost done. Fine. So now what do we do?
we will go here on these 3 buttons. We'll click here. We'll click here. I'll say copy path. ठीक है. And then यहाँ पर इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे. मान लो I'm saying data. So I will say data is equal to pd dot read chv. And यहाँ पर I will give the value and I will give the separation. So I will say separation is equal to this t. Okay. So, my bad. This should be inside inverted commas. Right. So with this, what we have done is we have read our data. Okay. So reading the data set. This is what we are doing. And then you can say data dot head just to see what are the values available here. Okay. So you see this is phrase ID, not very important for us. This is sentence ID, again not very important for us. This is actually the phrase. Okay. A series of explanation demonstrating the advantage, something like that might be written. Okay. So this is the phrase which is important. Obviously you cannot see the entire statement here, but koi baat nahi. You can understand ki multiple statements must have been written or multiple reviews must have been written inside the phrase wala column. And then finally you have the sentiment jahan pe it is written either 1 or 2. Okay. Then there are actually 1 2 nahi hai, 1 2 3 4 5 bahut sara hai. So let us try to understand this data set. Okay, let us try to move ahead and let us try to understand this data further. So I will say data dot info. Okay, so it shows that there are 1,56,060 entries in all the columns that we have. So obviously 1,56,000 entries है, तो ये एक बहुत बड़ा data set होगा. Okay, so it is a very big data set. And if I talk about the data type, तो आपका phrase ID जो है that is integer in nature. Okay, sentence ID is also integer in nature. Phrase जो है जो कि basically हम लोग का review है, that is object because it is all words, English words are there. Okay, and sentiment again is integer in nature. Fine. Memory usage is 4.8 MB plus. That is fine. No need to worry about that. And this is in general what we are going to understand. अब again चलो info में से कुछ तो information मिला, but I want to move a step ahead. Okay, what I want to do is I want to visualize कि यार मेरे data में जो भी चीज दिख रहा है मेरे को वो क्या है, मतलब how is that represented and what is the entire orientation of my data set. So for that what I will do is I will be visualizing the entire data set, and for that I will have to use my matplotlib library. Okay, so I will say sentiment count is equal to data dot group by. This is a built-in function which helps you in grouping different columns together. So I will say sentiment dot count. Okay, and then I have to use, let's say एक bar plot बनाते हैं, that will be sufficient for us. I will say plt dot bar. Okay, and इसके अंदर I will pass my sentiment count. I will pass the index values, index dot values. Okay, and then क्योंकि मेरे को इसको किसके साथ कंपेयर करना है, phrases के साथ, I will say sentiment count, sentiment, एक second, sentiment count phrases, या phrase है ना, phrase है आपका.
डेटा में लिखा हुआ है. So phase. Okay. Then I will just try to make it a more intuitive. So I will say plt.x label. Okay. मतलब x axis में क्या लिखना चाहिए? So I will simply write review sentiments. Okay. And then plt.y label. plt.y label में क्या आएगा? आपका number of reviews. ठीक है. तो ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका number of reviews and आपका review sentiment के बीच बनेगा. And finally I will say plt.show. Let us see कुछ काम का दिखे तो phrase यहाँ पे क्या गलती होगा. plt.bar sentiment count index value, sorry, index values sentiment count phrase. ठीक है. It should work. Index is not defined. Index values, index.values. This should work. यहाँ पर if I go back to my code, index values है ना, ये क्यों नहीं काम कर रहा? Let us in that case try to define index values. Simple. उसको define करते हैं. Index values में क्या डाल देंगे? If it is not taking it directly, what we can say is ठीक है. Okay. Okay, so I'm getting the graph, but यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है. Okay. ठीक है. I'll come to this. देखते हैं कहाँ पे error आ रहा है.
Apart from that, you see, this is what we have. ठीक है, यही चीज I wanted to show graphically so that you can understand. But हाँ, यहाँ पे भी देख के थोड़ा बहुत idea तो लग ही जाएगा. So here what is happening is you are having different reviews. You are having 0, 1, 2, 3 and 4. ठीक है. So यहाँ पर क्या है कि आपका 0 रिव्यू अगर कोई दिया है तो वो 7072 पीपल हैव गिवन. ठीक है. एक रिव्यू कोई दिया है वो कितना है, एक मतलब एक स्टार यू कैन कंसिडर. ओके, 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग इस टाइप से. सो 0 रिव्यूज कितना लोग दिया है, 7000 पीपल. एक रिव्यू कितना लोग दिया है, 27000 पीपल, 27273 टू बी स्पेसिफिक. सिमिलरली 2 रिव्यू मतलब 2 स्टार रेटिंग कितना लोग दिया है, 79000 पीपल, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो हाईएस्ट अगर आप एक बार ग्राफ इसको देख करके बनाते हैं, so you will be getting that the highest for 2, फिर आपका 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 के लिए होगा, and then 0 के लिए होगा, something like that. Okay, वही चीज मेरे को यहाँ पे दिखाना था, but somehow it's not working here, so I will just remove this. बाद में देखते हैं क्या करना है इसका. Okay, so you get an idea कि actually ये जो पूरा बड़ा सा डेटा सेट है, इस डेटा सेट में क्या ओरिएंटेशन है. क्या ओरिएंटेशन मतलब कि कितना डेटा किस चीज के तरफ you can say. Okay, so you are getting that information. Now once we have this, we can start with the proper discussion of sentiment analysis. Key sentiment analysis करेंगे कैसे. So अभी तक whatever we have done, that is not sentiment analysis, that is simple data manipulation and all. Fine. अब जो करेंगे वो sentiment analysis होगा. Fine. So before I start with sentiment analysis, just tell me if it is clear. कोई doubt है तो you can ask me. Yeah, Ravi, any questions? No, sir. Can you please scroll the code, sir, once? I wasn't. Yeah. So yeah, no, sir. Data info. So we just read the first head part of the data. We uploaded the libraries, read the head part. Yeah. No doubt, sir. Till now. ठीक है, fine. यहाँ पर बस एक extra चीज होता है which I am not able to show you right now. Maybe I will do it later on and share with you the code file. ठीक है, the code file which I will share वहाँ पे I will update it. ठीक है, so that you can just verify. वो यही चीज रहेगा, बस यहाँ पे you can see the things in numerical format, but वहाँ पर you will see them visually also using a bar graph. So I will do that. यहाँ पर I will make a bar graph. ठीक है, एक बार ग्राफ बना देंगे हम. Now comes the important part. So what we will do is just try to follow me along. What I will do is I will say from sklearn dot feature extraction. Okay, import feature extraction dot text, क्योंकि feature extraction numerical values पे भी होता है. So feature extraction dot text import count vectorizer. Okay, this is nothing but your vector w, है ना. w vector आपको याद होगा, वही same चीज है, count vectorizer. Okay, then what I will do, I will be importing from sklearn, from NLTK dot tokenize import reach xp tokenizer. Okay, why I'm using regex function I will explain you in a minute. Okay, so this is not a general tokenization which I'm doing here. Tokenizer. Okay, this is not a general tokenization which I'm doing. I will be using regex tokenization here. So I will just mention that regular expression
tokenization. Okay. Then why I'm doing that? What is the need of using regular expression? This tokenizer, regexp tokenizer, okay, what it will do? It will remove unwanted elements. I will just mention what is the need of it. Will remove unwanted elements from the data, such as the different symbols and numbers. अब देखो हम लोग को नंबर नहीं चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है जो कोई मूवी देखा एंड ही इज सेइंग दैट द मूवी इज 10 on 10. Okay, so he is saying this or he is writing a review like the movie was 10 on 10. अब 10 on 10 का मतलब कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है. Okay, so what we will do is we will try to avoid such reviews. Okay, तो अगर किसी रिव्यू में टेक्स्ट के अलावा नंबर्स का यूसेज किया गया है जैसे 10 on 10, या फिर अलग अलग सिंबल्स का यूज किया गया है जैसे some emoticons are used or something else is used, because you can simply understand कि whenever a person is giving a review वो थोड़ा informal भी हो सकता है. Maybe some people will start abusing the character or they will start abusing the person who has basically written the script, something like that. ठीक है, अगर कुछ बहुत ज्यादा ही एक्शन दिखा दिया गया है कुछ अनरियलिस्टिक सा, उसको भी people will start criticizing. ठीक है, so you will have to understand that whenever you are doing text analytics, the situation can arise where you will be getting some vague reviews, you will be getting some, you know, reviews which will have some inappropriate words or something which is, you know, at times difficult for us to decipher, जैसे using emoticons and all. ठीक है, so the idea is that whenever you are tackling such kind of a situation or whenever such kind of reviews come to you, what you can do is you can simply try to avoid them. इसीलिए यहाँ पे regular expression का use किया गया है. Okay, regular expression क्या करेगा? Regular regexp remove है ना, regexp tokenizer क्या करेगा? It will remove the unwanted elements from the text file. जैसे आपका बेमतलब का अगर कोई सिंबल यूज किया हुआ है या फिर कहीं पर नंबर्स का यूज किया हुआ है उसको हम लोग अवॉइड कर सकेंगे. ठीक है, सो आई विल क्रिएट द टोकन. आई विल से टोकन इज इक्वल टू regexp टोकन और टोकनाइजर रादर, एंड यहाँ पर आई विल से छोटा a से z से z 0 से 9. ये होता है आपका नंबर्स, राइट, एंड 0 से 9. ओके, what is the problem here? अच्छा ठीक है, I'm not yet done with the code. ठीक है, so I have created a token saying token is equal to regexp tokenizer. Then I will say that what sort of values am I talking about. ये capital Z होगा, sorry, ये capital Z होगा, capital A से capital Z 0 से लेकर के 9 तक. Fine. So this is the token which I am considering. Then I will say CV is equal to count vectorizer. Okay, and यहाँ पर I will convert everything to lowercase. Okay, this is something which we have discussed earlier also. Lowercase करेंगे. Stop words I will be using. Stop words कौन सा language में? Obviously English, क्योंकि this is entirely on English. Okay, then I will say n-gram range. अब ये एक आपके लिए नया चीज है, n-gram range. So I will just write down this part and then I will explain you what do I mean by n-gram. Okay, and then one more parameter we will have to write, which is tokenizer. So I will say tokenizer is equal to token dot tokenize.
tokenize, right? Token dot tokenize. And finally ये सब कुछ लिखने के बाद what do we do is we will be fitting everything. So I will say text underscore counts is equal to cv dot fit. तो ये एक fit function है, ये usually आपका fit transform function है, transform ये आपका usually machine learning में भी यूज होता है and यहाँ पर भी यूज होता है and यहाँ पर basically we will be using it with respect to the phrases that we are going to have. ठीक है, इसको रन करते हैं. Cannot import names regex from NLTK dot tokenize. Wait. From NLTK dot tokenize token POKE import regexp regexp एक स्पेलिंग मिस्टेक. अब क्या बोल रहा है? Cannot import, still the same thing. Tokenizer TOKE. Spelling in the reject tokenizer. Spelling mistake. What am I doing today? Tokenizer. अब कहाँ पे? Token is equal to tokenizer. Fine. थोड़ा बहुत spelling mistake था, otherwise everything was okay. यहाँ पर what you need to understand is बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक है. What is new for you is this n-gram range. ठीक है, तो जब भी हम लोग टोकनाइजेशन का बात करते हैं वहां पे we have unigrams and then we have multigrams also. तो multigram में it can be a bigram, trigram, all those things can be there. तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिग्राम का मतलब क्या हुआ? बाईग्राम का मतलब क्या हुआ? That simply shows you the count of token that you are considering. तो usually जब भी हम लोग टोकनाइज करते हैं we consider unigram only. Okay, तो यहाँ पे भी n ग्राम का रेंज 1 से 1 लेने का मतलब यही है कि we are actually saying that n gram is nothing but a unigram. Okay, n gram मतलब n gram का रेंज क्या है? 1 से लेकर के 1 तक. And if you can recall your range function from for loop, you will be able to recall that ये वाला part as it is exclusive है. ठीक है, तो हाँ, ये वाला part तो ऐसे भी exclusive है. Okay, because of which what happens is ultimately I will just mention it here only for you. N will be equal to 1 only. ठीक है, which means that is a unigram. ठीक है, it is a unigram. So यूनिग्राम कहने का मतलब क्या है कि एक बार में हम लोग एक वर्ड को ही कंसिडर कर रहे हैं इन अ गिवन स्टेटमेंट एज अ पर्टिकुलर आई कैन से टोकन. ठीक है, जैसे मान लो कि आई एम सेइंग अ स्टेटमेंट लाइक टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स से. सो टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, ये सारा अलग अलग वर्ड्स जो है दे विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल टोकन्स. ठीक है, तो दैट इज द आइडिया ऑफ n ग्राम, स्पेसिफिकली यूनिग्राम. अगर बाईग्राम रहता तो टुडे इज बिकम्स 1 टोकन, अ ब्यूटीफुल बिकम्स अनदर टोकन, लाइक दैट. तो एक बार में दो वर्ड्स को कंसीडर करेंगे एज अ पर्टिकुलर और एज अ सिंगल टोकन. ओके, वो बाईग्राम में होता है. ओके, ठीक है. सो ये चीज हुआ हम लोगों का. ये चीज समझ में आया? एक बार जस्ट चेक कोड में कहीं कोई डाउट है तो एक बार देख लो.
then you can ask. Yes, sir. In the last line, so we are taking the phrase from the data, whatever we have uploaded. We are transforming, we are converting it to CV format, that is count vectorizer, and then putting it in text counts, right? Yeah. So this phrase part is nothing but ये वाला The column. data from which we have. Okay, that's it, sir. Yeah. So from this, we are removing the unnecessary elements by using regex tokenizer, right? Right. Regex tokenizer, right. Okay. Yeah, that's it. Yeah. ठीक. So ये चीज हुआ हम लोगों का. Next, what we will do is, as you can remember, last class में I was discussing about some machine learning concepts which I told you कि यहाँ पे आपको काम आएगा, है ना? तो वहाँ पर basically I told you कि we are having something known as train test split, मतलब data को train set में and test set में divide करते हैं. Okay. One more thing that you should remember is that usually the train size that we have और train set का जो size होता है वो बड़ा होता है. जैसे मान लो अगर आपके पास 100 डेटा है, उसमें से हम लोग 80 डेटा को यूज करेंगे फॉर ट्रेनिंग पर्पस एंड 20 डेटा को यूज करेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पस. और यू कैन यूज 70 डेटा फॉर ट्रेनिंग, 30 डेटा फॉर टेस्टिंग, या फिर 10 डेटा को मान लो टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, 90 डेटा को यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए. क्योंकि जितना अच्छा से आप ट्रेनिंग करेंगे या जितना अच्छा से आप लर्निंग करेंगे, आपका टेस्ट में भी उतना ही अच्छा एक्यूरेसी शो होगा. तो more important is that how well you are training yourself or how well the model is learning, है ना? And you know कि लर्निंग कब होता है, ट्रेनिंग में होता है. सो इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा डेटा देते हैं जब लर्निंग किया जाए या जब ट्रेनिंग किया जाए. जब टेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चंस में भी हम आपको टेस्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आई विल हैव टू टेस्ट यू ऑन 100 क्वेश्चंस. इफ यू कंसीडर NLP, सो वी आर डन विद द सिलेबस टुडे, है ना? तो आपको हम लेट्स से 5 दिन का अगर टाइम दे कि पूरा NLP रिवाइज करो एंड फिर छठा दिन आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ योर्स, है ना? तो 5 दिन आई विल गिव यू, you will have some time for yourself to prepare, है ना? If I give you 10 days, हो सकता है आप और अच्छा प्रिपरेशन कर पाए, है ना? If I give you only 2 days, then what will happen? You will have to do everything very quickly. You will have to practice the code. You will have to practice the concepts very fast. Okay? तो हो सकता है कि जो थोड़ा less important चीज हो, वहां पे आप prioritize करने लगेंगे चीजों को, है ना? तो जो थोड़ा less important चीज है, उसको क्या करेंगे आप? Avoid कर देंगे, छोड़ देंगे कि यार उतना टाइम नहीं है, रहने देते हैं, है ना? And by chance, if I ask you questions from that part only which you have missed, तो क्या होगा? आपका एक्यूरेसी घट जाएगा या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो मार्क्स कम आएगा, है ना? तो if I, instead of giving you 2 days time, if I give you 5 days or if I give you 10 days, you will have sufficient time, है ना? आप अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर पाएंगे, NLP को भी, पाइथन को भी, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे. And then when you give the test, you will be getting some good marks. ठीक है? वही सेम चीज यहाँ पे भी है. So instead of giving less weightage or less number of data sets to train, what we do is we give more and more. मतलब you can say 80% डेटा हम लोग usually ट्रेनिंग के लिए लगा देते हैं ताकि आपका लर्निंग अच्छा से हो. एंड एक बार लर्निंग सही से हो रहा है तो क्या होगा? आपका जो टेस्ट में एक्यूरेसी आएगा वो भी कंपैरेटिवली अच्छा आएगा. ओके. नाउ अगेन देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि सर अच्छा एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, है ना? देयर कैन बी अ क्वेश्चन. So always remember that in case of artificial intelligence or data science, anything more than 60% is a good accuracy. Okay. अब ऐसा नहीं है कि आपको 90% लाना ही है या 95% लाना ही है. वो बहुत रेयर केस में होगा, स्पेशली अगर हम लोग आज का डेटा के बारे में बात कर रहे हैं. So I don't know how much accuracy we are going to get, but I don't think we are going to get more than 70% or 65%. क्यों? क्योंकि the data set is very huge. ठीक है? तो जब डेटा बहुत बड़ा होता है ना, तो chances of you getting good accuracy becomes less.
ओके, एंड दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आपको 60% तक एक्यूरेसी मिल रहा है तब तक समझ लो कि आप एक कमेंडेबल काम किए हैं। ओके, अगर 60 से कम आता है, मान लो 50% आता है या 45% आता है या 55% आता है, ओके, तब यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ थोड़ा बहुत गलती किया गया है, इसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है अपने परफॉर्मेंस को। ठीक है, सो एनीथिंग मोर देन 60, एनीथिंग 60 और मोर देन 60 इज अ गुड एक्यूरेसी। ठीक है, तो देखते हैं। आई विल से फ्रॉम sklearn dot model selection import, what is the time, एक second. Okay, I'm having 20 minutes. ठीक है, so model selection import train test split. Okay. And then I will say x train, x test, y train. Okay. See what we are doing here. यहाँ पर basically I have imported the train test split thing. Okay. And जब हम लोग बात कर रहे थे machine learning के बारे में, वहाँ पर I told you कि there will be 4 components: x train, x test, y train and y test. And x में क्या होगा? सारा independent values और सारा independent columns. y में क्या होगा? Dependent column. Okay. So यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए y के अंदर, तो y के अंदर आ जाएगा आपका फाइनल सेंटिमेंट वाला जो कॉलम है वो, इसीलिए आई एम यूजिंग इट हियर। ओके, सो सेंटिमेंट इज द मेन थिंग व्हिच इज डिपेंडेंट। मान लो फ्रेज में कुछ बदलाव आता है, स्पेसिफिकली फ्रेज में ही बदलाव आने से सेंटिमेंट में चेंज आएगा। सेंटेंस आईडी एंड फ्रेज आईडी डज नॉट मैटर। Okay, so if you wish, you can drop these two also. Okay, when you practice this code file from your side, when I will share it with you, तब आप ये दो कॉलम को उड़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो कहने का मतलब है कि जब फ्रेज में कोई बदलाव आएगा तो सेंटिमेंट में चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, सो यू कैन से phrase is the independent column, sentiment is the dependent column. So sentiment becomes your y, phrase becomes your x. ठीक है, now if I come down, ये चीज हो गया। एंड देन आई एम सेइंग टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2। कहने का मतलब है कि इफ आई एम हैविंग entire data set as 1, okay, 0.2% of 1, which is nothing but 20%, will be utilized for testing the data. ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, 56,060 रिव्यूज है आपके पास। ओके, इसका 20%, ओके, जितना भी वैल्यू आएगा, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स फॉर दिस। तो इस वैल्यू का 1,56,060, इसका जो 20% होगा, दैट मच अमाउंट ऑफ रिव्यूज विल बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, फॉर टेस्टिंग पर्पस। एंड 80% इस डेटा का, 1,56,060 का 80% विल बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। ठीक है, only 20% for testing, rest 80% will be used for what? Testing, training. Okay, so 20% data is used for testing purpose. ठीक है, this is what we are doing. डेटा को कर दिए स्प्लिट, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, ये सब कुछ मिल गया। एंड देन we will start with the model. Okay, मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार जस्ट चेक कर लो, कोई डाउट है तो।
No, sir, it's fine. Yeah, yeah. It's just what we have discussed the day before yesterday, right? The testing and training and how we, Mm-hmm. and then out of which we are minimum thing we are testing and maximum thing we are training. So yeah. Right, right. Mm. ठीक है, fine. So this is what we have seen. Okay, now comes the last part and the most important part. What we will do is we will be preparing the model. So preparing the model for sentiment analysis. Okay, so I will be importing your multinomial name base. Can you just, I will say from xlm dot name base. Okay, so this is what we are getting. The accuracy of your model finally will be 60%. ठीक है, इसको थोड़ा बहुत change कर सकते हैं. मान लो if I come here and if I make my test size as 0.3, मतलब 30% data use होगा, तो this will change. ठीक है, 60.4 हो गया ये. इससे पहले ये कुछ और था. Okay, similarly if I make it 0.4 मान लो, 60.3 हो जा रहा है, तो it's unnecessary to increase the test size. Let us simply keep it 0.2. I guess सबसे ज़्यादा उसी में आ रहा था 60.61 आ रहा था. ठीक है, 61. Okay, so the final accuracy of your model is 61%, which is okay, decent enough, because as I told you यहाँ पर ज़्यादा accuracy आएगा नहीं क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है. Okay, so यहाँ पर हुआ क्या? ठीक है, लास्ट लाइन चलो समझ में आ रहा है कि accuracy को print कर दिए, but ये चार चीज क्या हो गया? So basically what we are doing is, for understanding your sentiments, we are importing this algorithm. Okay, so multinomial NB or multinomial name bias is the algorithm which is working as the backend. So multinomial name base is the algorithm working in the backend. ठीक है, now ये समझ में आ गया लाइन.
Then what we are doing is we are importing matrices. Matrices matlab performance matrices, you can say, or these are those values which will help you in understanding that how well your model is performing. अब how well your model is performing is nothing but the accuracy of the model, है ना, कि उसको कितना मार्क्स है टेस्ट में, ठीक है. So whether it is getting accuracy of 60%, 65%, ये पता क्या चलेगा. For that you have different accuracy parameters. Okay, and where do you find them? You find them inside matrices. So that is why I'm importing this matrices. And then what I'm saying is CLF मतलब ऐसा मत समझना कि कोई ऐसा ही है. You can give any name here. So you can say model also. Okay, just in case you are, you know, getting confused. CLF कुछ होता है, so कुछ नहीं होता है. Okay, so you are getting the same things again also. So that CLF was nothing but the name of the variable. So instead of that, you can say model, you can say A, B, C, जो मन में लिख दो. ठीक है. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि I am using the fit function. जैसे यहाँ पे fit transform use किए थे कुछ देर पहले, you see fit transform कुछ देर पहले use किए थे, वैसे ही यहाँ पे fit function use करेंगे, which is very important for us while we are performing the training part. तो पहले training होगा. Okay, that is why I have written कि training is taking place here. Okay, and then यहाँ पर क्या होगा, testing होगा. ठीक है. तो जब भी testing होगा तो X टेस्ट पे होगा, टेस्ट वाले डेटा पे टेस्टिंग होता है एंड ट्रेन वाला डेटा पे ट्रेनिंग होता है. सो यहाँ पर आई कैन से टेस्टिंग इज टेकिंग प्लेस. टेस्टिंग इज टेकिंग प्लेस एंड फाइनली यू आर गेटिंग द एक्यूरेसी कि यार टेस्ट हो गया, ट्रेन हो गया. ओके, ट्रेन हो गया मतलब सीख लिया, टेस्ट हो गया, चेक कर लिए कि कितना उसको आता है कितना नहीं आता है. तो दैट एक्यूरेसी हैज टू बी डिस्प्लेड ना, कि उसको कितना मार्क्स आया लेट्स से इन अ टेस्ट. तो वही डिस्प्ले किया जा रहा है using this particular line. ठीक है, and we find that it is nothing but 61%. ठीक है, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो ask me. No, sir, it's clear. ठीक है. So this is the sentiment analysis model that we have prepared. इसका 61% accuracy आ रहा है.